सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण और प्रिय सभाकार, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे कार्यक्रम में. Good morning, ladies and gentlemen. Currently, we are waiting for our chief guest of honors, and others to be with us. When they arrive, we'll start our program. Meanwhile, let me read the agenda of the program. After registration, we'll start with our felicitation of dignitaries. Then it will be followed by lighting of lamp. After that, we'll have welcome address by Dr. Rajdeep Roy, Member of Parliament, Silchar. It will be followed by inaugural prayer by Donli Polo Cultural Charitable Trust students. Then there will be speech by T.G. Momin, President Garo's Students' Union, on youth and environment in Northeast. Then we'll do the formal inauguration of artwork. It will be followed by a speech by Sri Mama Natum, Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Government of Arunachal Pradesh. It will be followed by then speech by Director, Botanical Survey of India, Dr. A. Mao. And then we'll have Honorable Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Sri P.D. Sona with his inaugural address. After that, we'll be handing over the live sketch of the chief guest by artist, and it will be followed by vote of thanks. We have also a host of special dignitaries of the dais. I welcome you all, sirs. Also, I would like to request all the audiences who are here to visit different exhibition and also to relish and enjoy indigenous products in traditional food stall after the inaugural session. And also in the evening, in the valedictory session, we have for you culture and prize distribution. So we are also expecting all of you to stay back till the culmination of the program today. Thank you. Ladies and gentlemen, as our guests are on the stage, let us begin with the program. नमस्कार, सुप्रभात, आदरणीय अतिथिगण और प्रिय सभाकार, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे कार्यक्रम में. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Arunachal Pradesh, in collaboration with Vivigure Northeast Foundation, it is my utmost pleasure to extend a warm welcome to each and every one of you to this 8th edition of Northeast Green Summit here at Nokmenamati Hall of Arunachal Pradesh State Legislative Assembly, Itanagar, on 10th March 2024. It is dedicated to brainstorm solution towards net zero sub-emission region and exploring and addressing the critical issues being faced by our environment today. I am Bar Yakar, Assistant Professor in Political Science from Deranathum Government College, Itanagar. I am hostess of the program. Ladies and gentlemen, on the stage we have our esteemed dignitaries, Honorable Speaker Arunachal Pradesh Shri P.D. Sona sir, who is gracing us as our chief guest. We have also our Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change, Government of Arunachal Pradesh, Shri Mama Natum sir, as our guest of honor. Also, we have esteemed guest, Honorable Dr. Rajdeep Roy, Member of Parliament, Silchar, who is also advisory board member, Northeast Green Summit. Next is esteemed dignitary, respected Sri C.P. Marak, IFS, retired, Executive Chairman of MGOS and Advisory Board Member, Northeast Green Summit, and host of other dignitaries present here of the dais as well.
Mention here is especially of Sri Tengsak Ji Momin, President Garo Student Union on Youth and Environment in Northeast. He is also with us today. I heartily welcome you all, sirs. Also, I warmly extend my welcome to all the academicians, principals, research scholars, environmentalists, representatives from NGOs, different organizations, artists, students, and ladies and gentlemen present here to this august gathering of this inaugural program. In this Nokme Namati Hall, surrounded by the beauty of nature and shared passion of environmental conservation, we embark on a journey of knowledge exchange, collaboration, and action. Today, we come together not only as an individual but as collective force committed to safeguarding our planet for future generation. The significance lies with environmental challenges mounting at an alarming rate, from climate change to biodiversity loss. The need for concerted efforts and innovative solutions has never been more urgent. It is through forums like this that we can harness the power of collective wisdom, expertise, and determination to drive positive changes. The summit, designed to delve into a myriad of topics ranging from sustainable development practices and climate change solutions to green entrepreneurship, medicinal plant technology conservation, ecotourism, and environmental policy frameworks, etc. Through engaging in discussions, insightful presentation, and interactive workshop, we aim not only to raise awareness but also inspire concrete actions that will propel us towards a more sustainable and resilient future. All these tasks are performed in keeping in mind the theme of Green Northeast, Clean Northeast, Sustainable Northeast. As we embark on this journey together, let us remember that each and every one of us has a crucial role to play in shaping the destiny of our planet. Whether you are a seasoned environmentalist, a policymaker, a researcher, or a concerned citizen, your voice, your ideas, and your actions matters. Once again, heartful welcome to 8th Northeast Green Summit. May our time together be enriching, enlightening, and empowering. Before we start our felicitation of dignitaries formally, I would like to also welcome warmly Dr. A. Mao, Director Botanical Survey of India. He is also with us on the stage. Now to start the program, we have felicitation of dignitaries with stole, traditional jacket and trophy from the side of organizer. And to felicitate first our chief guest, Honorable Speaker Arunachal Pradesh, Sri P.D. Sona sir, I would like to request Sri C.P. Marak, IFS retired, Executive Chairman of Members and Advisory Board of Northeast Green Summit to do the honor. Ladies and gentlemen, our chief guest of the program, Sri P.D. Sona sir. Also on the dais we have on the extreme left Dr. Ranjan Kumar Bora, former Vice Principal, Lakhimpur Girls College. I would like to welcome you all. Welcome all to you, sir, also. Sorry, he is off the dais. Now, I would like Minister for Environment, Forest and Climate Change, Government of Arunachal Pradesh, Sri Mama Natum sir. I request the representatives from the side of organizers. Yes.
Ladies and gentlemen, Sri C.P. Marak IFS retired, felicitating our guest of honor, Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change, Sri Mama Nathum Sir. Guest, Honorable Dr. Rajdeep Roy, Member of Parliament, Silchar, who is also Advisory Board Member, Northeast Green Summit. Thank you very much, sir. And now to felicitate, to request Founder President Sri Sankadeep Chaudhary, Vivigure Northeast Foundation, also Vice Chairman, Jugan Santa Group of Newspaper. Representatives, I request you to please bring the felicitation. C.P. Marak, IFS retired Executive Chairman of Boards and Advisory Board Member, Northeast Green Summit. Now again, I request Founder President Sri Sankadeep Chaudhary to felicitate our guest, Dr. A. Mao, Director. And now to felicitate of the dais guest, I request again the Founder President of Vivigure Northeast Foundation to do warm welcome to our guest Sri Tengsak Ji Momin of the dais. Branch Manager, LIC. Us 134 Battalion Eco Task Force. Welcome, sir. Also, Lemley Louis, General Manager, Netfee. After this, we request sir to felicitate and welcome Sri Rakesh Mathur. So I would like to request our Chief Guest, Honorable Speaker, Arunachal Pradesh. Thank you very much, sir. After this, next we have lighting of the lamp ceremony. So I would like to request our Chief Guest, Honorable Speaker, Arunachal Pradesh, Sri P.D. Sona and all other dignitaries present on the stage to kindly come forward for the auspicious lighting of the lamp ceremony.
Ladies and gentlemen, this light signifies illumination, a journey from dark to light, ushering all towards knowledge and understanding. Thank you all. Kindly please be seated. Moving forward, now I would like to request Dr. Rajdeep Roy, Member of Parliament, Silchar, and Advisory Board Member, Notice Green Summit, to kindly come to the dais for his welcome speech. Please grace us with your presence, sir. Good morning, everybody. Sabhi ko namaskar. On the dais, the chief guest of today's program, Sri P.D. Sona, Honorable Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly. On the dais, as guest of honor, Sri Mama Natu, Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change for the state of Arunachal Pradesh. On the dais, Dr. A. A. Mao, Director, Botanical Survey of India. On the dais, my good old friend, Mr. C.P. Marak, who's been a leading light in this regard for many, many years. He hails from the state of Meghalaya. All the dignitaries of the dais, my student friends, today is indeed a very important day for us. On behalf of the Vivgyor Foundation, as we meet here today for our 8th meeting of intellectuals, scholars, and domain experts in the field of environment and climate change. We have held 7 editions previous to this in all various institutes of Northeast India, from IIT Guwahati to NEHU to NIT Silchar and all other institutes across Northeast. This is the first time that Green Summit has come to this beautiful state of Arunachal Pradesh. And the man behind bringing this Green Summit to this place is none other than your iconic Forest Minister, Sri Mama Natu. I wholeheartedly thank him on behalf of the organizers and also on behalf of the activists for climate change and environment to bring us to this place. We are indeed thankful to you. Friends, as we embark on our journey for the future, the generation Z that is sitting over here, we are actually thinking that how to save and protect this earth. As we know that we on the highest level of organism, all sort of life that is available here in this planet, we probably are one of the topmost in the ladder. And more so is our responsibility to protect this, not just for our next generation, but for the interest of the whole planet. Friends, we have only one home, and that is Earth. And we need to protect it. We have made many mistakes in the previous years, and these mistakes are harming our climate change factors. Today, our experts are telling us how to sustain life
here in this planet, and what are the ways and means to do it. We need to percolate those principles to our next generation so that we get a beautiful earth to live on. Friends, as a lawmaker, we have been talking of environmental changes. Our country has taken a lead in a lot of aspects. You know that the COP meetings that take place, we have given landmark decision. Our Prime Minister, Sri Narendra Modi, has given us a target of net zero emission by 2070. So friends, we have a long way to go. We are thinking of a lot of policy changes which our country has undertaken. We are talking of new changes will drive our life for the next generation. Friends, we are also learning new things every day. And as Swami Vivekananda said, in Bengali if I say, Jotodin bachbo, totodin shikbo. Ar jotodin shikbo, ami totodini bachbo. To translate it into English, it means that I will live so long as I learn, and I will learn so long as I live. So friends, this is a very interesting subject. I hope that in the next few hours, we will deliberate, we will discuss, we will debate, and we even have differences of opinion. But overall, we'll come to a consensus in the better interest of the earth. Friends, as we say that sky is the limit. When I was a student in the 70s and 80s, we were taught sky is the limit. Today our Prime Minister has said sky is not the limit. Especially for young generation, you give flight to your ideas. Whatever may come to your mind, just talk and discuss with your teachers and other people. There may be new things coming up from your thought process. Friends, I would like to not prolong my welcome address. I would welcome each and everyone to this one-day event. We have been organizing this for the past 7 editions, and we have been doing it for a prolonged 2.5 to 3 days. Though this time for certain constraints, we have all packed it into, encapsulated into a single day's program without losing the essence, without losing all the subheadings that are going to be discussed in different halls. I wish your pleasant stay here in the beautiful city of Itanagar, and most importantly, the students who are here, the generation next who's here, will learn from our experts and scholars. I hope you take back the best message of this 8th Green Summit being held at Itanagar. Thank you once again. Thank you very much, sir. Moving on, we have now inaugural prayer. This will be presented by Doni Polo Culture Charitable Trust students, and it will be then followed by time of reading to the dignitaries. Ladies and gentlemen, the student will incite the prayers to Doni Polo for invoking various elements of nature for a fruitful summit. May we constantly be aware of how our actions impact environment and strive to create a fairer and more sustainable world. Soya, mutoya, jilo
sound. Andoni, aterto Andoni, aterto Andoni. Anaga pasarga, anaga tablanga, anaga haraga, anaga puliga, nyeranga, abuga, lapanga, nyorang loga, nyepang luga, doniga, aluso, nyinga, hintaba, hingloba, habunalam, lakrunga, rumnamam, rumrapa, rinaka, Guluga, abuga, taniga, nyaga, nomani, kipa, dera, baklinga, parini, rumga, lakrunga, rumga, konamsam. Santaga, gambunglo, langnaga, gambunglo, pachuga, pabuga, gambunglo, gariga, goraga, gambunglo, badanga, taraga, gambunglo, tuktepa, lerupa, mohawaka, sarsoga, sangguang, kapanga, gadula, yajika. Ladies and gentlemen, the chanting went. The reading is made of a sacred thread from creeper plants called ripuk. It is tied on the right hand of the males and left hand of female to bring good health, positive energy, and a harmonious career. It is also a prayer to Doni Polo to protect from accidents and bodily weakness. In agenda, we have speech by President Garu Student Union. He will be talking on youth and environment in Northeast. So I take my privilege to request Sri Tengsak Ji Momin on the dais, please. Good morning, everyone. I give my thanks to the Green Summit members for organizing this wonderful event. I'm very proud to say that the first edition of Northeast Green Summit was started at Tura. And this is the 8th edition I've been to now. As far as I know, when the co-founder and chairman, my friend Sankadip, was talking to me about Green Summit, he was trying to tell me that he wanted to find solutions to our environmental problems and how to preserve our culture, how to preserve our ancient links to nature, and preserve traditional medicines, conserve environment, and protect our limited resources. It has been said that youths are the future of our world. It has been spoken from different paradigms, from different dimensions, from different perspectives. This is very true, because in an essence, the youth are the present and future productive entities of our society, depending on various ranges of age. Some developed countries, Western developed countries, and some developing countries are right now facing a very big problem, in that their population, the youth in their population is declining. So the productive youth are declining in some of the Western nations. Say for example, China. China had a one-child policy. We all know that one. Now this policy is having a negative impact on the population of productive youth, with age range ranging from 16 to 59. Statistics have shown that the people within the age group of 15 to 59, 16 to 59, it has declined from 62% in 2023 to 61.3% in 2024.
Now China has struck down this one-child policy, and they are now encouraging its citizens to start families and to have more children, because they are facing a very big problem. China being the economic and especially the manufacturing hub of the world, they are facing a problem because most of the youth who are the working youths, they are declining. This is the problem they are facing. But there is a good news for India, as 66% or 800 million of our population is under the age of 35, according to recent studies. And Northeast is home to, the Northeast region is home to 4% of the country's youth population, which is around 20 lakhs, more than 20 lakhs, which is a good thing for us, because this is the working productive youth. Now, youths are very active in Northeast through various organizations like NESO and prominent organizations in each and every state amongst different communities. That in Northeast, this political discourse and policies have been based on student youth activism. Now I cannot speak about the whole of Northeast because my experience is limited to Meghalaya, but I as a GSU president have witnessed and was involved in youth activism for many years, and our activism includes political, social, cultural, literature, growth and development of the economy. From my personal experience, don't get me wrong, we stopped one company called the Star Cement company from setting up a factory in one of the interior villages of Garo Hills, in the South Garo Hills district. They wanted more than 400 bigas. Now this forest was a virgin forest, an ancient forest. So we did not allow this company to start. We are concerned about the environment as GSU also. Then there was the dam project. We did not allow the dam project because of the ecological importance of that place and the various consequences for the inhabitants of that place, for the people of that region. And then there was the problem of migratory ducks also. NESO has been requesting or putting pressure on the government of India, saying big dams must not be built because it has huge ecological impact. It has huge impact on the inhabitants because it will flood huge areas. And another thing is, what has happened is very good regarding the coal belt areas in Meghalaya. So certain youths from Karbi Anglong and certain youths from Giant Hills, they filed a case in the court against coal mining because their contention was because of coal mining, because of the leakage of sulfur from red hole coal mining, the water quality was degrading. In some cases, it was almost undrinkable. And to add to that, it was destroying the native indigenous species and marine lives. In Garo Hills also, there are some streams, there are many streams actually in the coal belt areas, many streams and some river where you will find not even a single marine life. Forget about fishes. You will not even find a single marine life. The water looks very clear, but the local people of that region will tell you, do not touch that water. That water is neither drinkable. That if you touch that water, you may have some skin problems also. So these are the things. Now this, because of this youth activism, because of the filing a case, the NGT, the National Green Tribunal, came into force and stopped red coal mining in Meghalaya.
So this is the power of youth, and I'm talking to my generation, next generation students. We do have the power if we give it our all. Now, though Northeast industrially backward, if we compare it to mainstream India, but still we have some industries, existing industries, and then there's deforestation, which are occurring in large areas, and then there is serious problem of floods also. So there is a development also is having a huge impact on our environment. That we know, we all know about that one. Now, what I need to say is, while it is true that development is essential, it is also true that sustainable development must be an option for reducing negative impacts on environment. What our elders need to teach us and the next generation is awareness on the conservation of environment, awareness, social awareness also on how to protect our environment, how to pursue practices to make sure that the world is livable and safe for the next generation. This must be part even of our educational curriculum also to a large extent, because it is not enough right now, the level of awareness that our youth are understanding how to conserve environment. I've also been taught by one chief minister, these G issues against development, because when some development projects come, we look at environment also, how it will impact our environment, how whether this cost benefit balance is maintained. So I told my chief minister, because he's the chief minister, we are not against environment, but we want to be sure that the impact, ecological impact because of development must be within range, it must be sustainable, and it must be such that if you want to follow one phrase, development with protection of our environment. Thank you very much. Thank you, sir. We extend our gratitude to you for your presence here and for your insights sharing. Next, we have inauguration of artwork. So I request the representatives to kindly bring their materials on the stage. And I would like to request Shri P.D. Sona sir, our chief guest, to formally inaugurate artwork by taking brush and stroking something on the canvas hanging on the easel. Display on the sport creativity and talent by capturing artistic glimpse. You can later see all their work outside in their stall. Thank you very much, sir, for your good gesture. Ladies and gentlemen, now before the speech of our guest of honor, we are proudly presenting before you the video documentary on air gun surrender in Arunachal Pradesh. Please enjoy. अरुणाचल प्रदेश अपने घने जंगलों और प्रकृति की सुंदरता के लिए देश भर में जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक आदिवासी राज्य है और कई पीढ़ियों से यहाँ के आदिवासी लोग
जंगलों से जुड़े हुए हैं। उनकी परंपरा और संस्कृति में जंगलों की बहुत ही अहमियत है और शिकार करना इनकी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब ब्रिटिश नहीं आया था उससे पहले हम लोग यहाँ इस जगह में आके ये जंगल से हम लोग बो और तिल से ऐसा करके हम लोग शिकार करके हम लोग मीट खाया था। उस टाइम में तो तिल से कितना मरेगा आदमी। एक महीना जंगल बनाने से भी ज़्यादा एक तो मिल सकता था, दो तो मिल सकता था। हाल ही में यहाँ के जंगलों में जीव जंतुओं की मात्रा काफी तेजी से घट रही है। इसका कारण है अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में एयर गन और बंदूकों का प्रवेश। कुछ लोगों के लालच और मनोरंजन के लिए अरुणाचल के जंगल में बहुत समय से गैर कानूनी तौर से जानवरों का शिकार किया जा रहा है और नए प्रकार की बंदूकें और एयर गन्स अरुणाचल के जंगलों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। एज ए ट्राइबल सोसाइटी हम लोग हमारा जो ट्रेडिशनल जो हंटिंग है उसमें हम लोग पहले हम लोग करता था, लेकिन आजकल क्या हुआ कि विद द मॉडर्न टाइम्स हम लोग का गन्स वगैरह हमारा विलेजेस में इंट्रोड्यूस हो गया। ये आके जितना हम लोग जानवर का आवाज़ सुना था अभी तो सुनने नहीं पाया है। एक्चुअली इससे जो हमारा छोटा जो जानवर रहता है तो उनको भी मारने का काम कर रहा है और बहुत मास हंटिंग होता है विलेजेस में। तो इससे क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे करके जब हमारा जानवर या हमारा जब चिड़िया हमारा ख़त्म होना शुरू होता है तो हमारे जो इकोसिस्टम है, जो हमारा इकोलॉजिकल जो हार्मोनी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू करते हैं। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए अरुणाचल के पर्यावरण और वन विभाग मंत्री श्री मामा नातुंग जी ने 5 मार्च 2021 की अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में एयरगन सरेंडर अभियान की घोषणा की। हम सब जितना हो सके गन और एयरगन साथ में हैंड सोइंग मशीन नेट को भी सरेंडर करने का हम सब मिलकर उसको कैंपिंग करें, ताकि मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि अरुणाचल प्रदेश को ऐसा प्रदेश हम लोग मिलकर बनाना है कि हम लोग एयर गन फ्री स्टेट और हैंड सोइंग फ्री स्टेट हम लोग को मिलकर बनाना है। परिवर्तन लाने के लिए पहला कदम 14 मार्च 2021 को ईस्ट कामेंग जिले की लमडंग बस्ती के लोगों ने उठाया। तो हम लोग लमडंग का बस्ती लोग जो जिस का पास में बंदूक था, इन प्रेजेंस ऑफ डीसी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट और एचओडी अवॉर्डिंगली हम लोग ये लमडंग में फर्स्ट एयरगन सरेंडर किया। इस एक कदम ने एयर गन सरेंडर अभियान को सारे राज्य में फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अरुणाचल के इतिहास में पहली बार 46 गन्स सरेंडर किया गया था और फिर यह अभियान पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। ये बात बस एयर गन सरेंडर करने की ही नहीं थी, बल्कि लोगों के विचार बदलना था। पर यह काम चुनौतियों भरा था। कि हमारा बच्चा का बच्चा, आपका बच्चा का बच्चा वो चिड़िया दिखाई नहीं देगा। जो इतना हंटिंग जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको बैन करना चाहिए और शुरुआत अभी एयरगन सरेंडर का तौर पे हम लोग ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और सरकारी अभियान से मकसद पूरा हासिल नहीं कर पाएगा जब तक जन समर्थन नहीं होगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग के कर्मचारियों ने दिन रात काम किया और समुदाय के विचारों को बदलने के लिए बहुत संघर्ष किया। पर पर्यावरण और वन विभाग की जोरदार कोशिशों और प्रचार के बाद अब यह अभियान सफलता की ओर बढ़ रहा है।
लोग बहुत प्रॉब्लम कर गया और कोई कोई गाली भी सुना और हमको अटैक करने के लिए भी आया था। बहुत कुछ ऐसा लोग थे जो देने नहीं चाहता था। ऐसा भी सुनने में आया था कि हम जो इतना खून पसीना मेहनत करके ये दामी वाला एयरगन मैंने कैसे दे दूँ बिना कॉम्पेंसेट करके। जो लोग समझदार थे वो लोग अपना यहाँ सरेंडर किए। शुरुआत में जो है कि थोड़ा इनको ऐसे मन में ऐसा डर था कि उनका ऊपर लीगल एक्शन होगा क्या नहीं होगा, तो उसे तो हमने दूर कर दिया। बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट का तरफ से ये एक प्रोग्राम चला रहा है, तो आप अभी गवर्नमेंट को कोऑपरेट कीजिए। हमारे जो स्टाफ्स है, हम सभी को फील्ड में जाना पड़ा, लोगों को कन्विंस करना पड़ा, लेकिन एक अच्छा चीज़ यही है कि यहाँ के लोग दे वेर वेरी वेरी रिसेप्टिव। दे अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एंड द वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। अभी तक लगभग हमारे पास में 2000 के करीब एयरगन सरेंडर हो चुके हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स, अरुणाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में से। और खुशी का बात यह है कि लोग एयरगन्स के साथ कुछ लाइसेंस 10 गन्स भी सरेंडर किए हैं। तो एक अभी हमारे प्रपोजल ये चल रहा है कि हम बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर में एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाएंगे, जिसमें एक डेडिकेटेड हॉल बनाया जाएगा, जिसमें जितने सरेंडर एयरगन्स और गन्स उसको डिस्प्ले में रखेंगे जिन्होंने सरेंडर किया उसके नाम के साथ में, जिससे कि लोगों को जो भी वहाँ देखने आए उसको एक मोटिवेशन मिले। एयरगन सरेंडर अभियान के एक बार जोर पकड़ने के बाद यह अभियान सबके चर्चा की बात हो गई। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जुंगपम गांव अरुणाचल का पहला एयरगन फ्री गांव घोषित किया गया है। लास्ट ईयर 3 अक्टूबर को हमारा जुंगपम विलेज को एयरगन फ्री विलेज डिक्लेयर किया था। ऐसे बुद्धिस्ट हम लोग ये चीज़ यहाँ मांगता है कि चारों तरफ चिड़िया हो। कई संगठन आगे आए और एयरगन सरेंडर अभियान का समर्थन किया। इसी वजह से आज यह अभियान सफल होता दिख रहा है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संरक्षण की मिसाल बन गया है। अरुणाचल के लोग अपनी मर्जी से अब तक 1600 से ज्यादा एयरगन सरेंडर कर चुके हैं। सभी यहाँ का मॉन्क्स लोग उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग का आदि सोसाइटी में एक आरन फेस्टिवल होता है, उसमें एक रिचुअल हंटिंग होता है। हम लोग अपना कम्युनिटी को इनकरेज करता है कि रिचुअल हंटिंग बंद करें। हम सब चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ एनिमल यानी कि स्पेसीज ऑफ बर्ड एनिमल बचा रहे। तो मेरा अपील ये है हमारा अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, कि हमारा जो जुंगपम गांव जिस प्रकार से एयरगन फ्री विलेज बना है, कि एक दिन ऐसा हो कि हमारा अरुणाचल पूरा एयरगन फ्री एक स्टेट बने। सभी प्लेज लेना चाहिए हम लोगों की। ये हमारा जो ऑलरेडी जो हमारा रिच बायोडाइवर्सिटी उसको हम और आगे एनहेंस करें, फॉर आवर सेक, फॉर आवर जनरेशन सेक, नेक्स्ट जनरेशन सेक। से एयरगन नहीं होने से हम लोग चिड़िया देखने मिलेगा, चूहा देखने मिलेगा, और हम लोग जंगलों को जाने का दिल हो जाएगा लोगों को देखने के लिए। इसलिए एयरगन अभियान को हम बहुत अच्छा लगा, ये कंटिन्यू चलना है। मैं ये पब्लिक से और ये लोग से मैं अपील करना चाहूँगा कि इंटर अरुणाचलिस्ट को तो अपना एयरगन को किसी भी हालत में सरेंडर कर लीजिए, ताकि हम अपना जंगल में जब जंतु को और दोबारा देखें। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ ये एयरगन सरेंडर कीजिए, ताकि हम सबको फ़ायदा मिलेगा और एनिमल्स लोग बहुत खुशी होगा, उसे हम लोग को बहुत लाभ मिलेगा। अरुणाचल में जितने हम लोग का बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने में हमारे मदद करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और इसके कॉन्टेक्स्ट में सब लोग अपना जितना एयरगन है उसको सरेंडर करने के लिए आगे आएँ। और मैं तो ये कहूँगा कि एयरगन खरीदे ही ना सब। आपका पास अगर एयरगन है तो
लमदंग जैसे सरेंडर करने से ठीक रहेगा। थैंक यू। ये पृथ्वी सभी जीव जंतुओं के लिए सामान्य रूप से बनाई गई है। एयरगन सरेंडर अभियान पर्यावरण और वन विभाग की ओर से शुरू की गई एक मुहिम है, जिसका साथ दिया अरुणाचल के लोगों ने, जिनके समर्थन और दूरदर्शिता की वजह से ये अभियान आज देश भर में जाना जा रहा है कि अरुणाचल के लोगों ने मिलकर अपने राज्य के पर्यावरण और जीव जंतुओं को बचाने का निर्णय लिया है और एयरगन सरेंडर अभियान जैसे प्रचार का साथ दिया। एयरगन सरेंडर अभियान का मकसद है कि अरुणाचल के जंगलों में सभी पशु पक्षी सुरक्षित रहें और स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत करें। Ladies and gentlemen, this short documentary is on the Air Gun Surrender Abhiyan, which is a much fated initiative of Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Arunachal Pradesh, to stop indiscriminate killings of birds in the state. The initiative has spelled new hope for conservation and protection of the rare, unique and endangered wildlife of Arunachal Pradesh by inviting people to voluntarily surrender their air pistols. Please support them and do visit their air guns surrender stall outside, waiting for your appreciation and spread the message. Now, I take immense pleasure, ladies and gentlemen, to invite on dais our Honourable Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of Arunachal Pradesh, Shri Mama Natum Sir, for his speech to the gathering on the occasion of 8th edition of Northeast Green Summit. Please, sir. सभी को नमस्कार। आज 8th नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट में उपस्थित हम सब के बीच में अपने अरुणाचल प्रदेश की ऑनरेबल स्पीकर, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ऑनरेबल स्पीकर पीडी सोना जी, डॉक्टर राजदीप राय ऑनरेबल एमपी उपस्थित, श्री सीपी मारक जी आईएफएस रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड टेंसक जी मोहिन प्रेसिडेंट गारो स्टूडेंट यूनियन एंड सभी उपस्थित all the dignitaries, ladies and gentlemen, ये ग्रीन समिट, ये हम आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम इस ग्रीन समिट में हम आज ये इस बार को लेकर 4 बार हो गया, 4 times, 3 times। गुवाहाटी आईआईटी में फर्स्ट शुरू हुआ, इसके बाद सिलचर में, उसके बाद मेघालय में 4 times, और इसी ग्रीन समिट को पार्टिसिपेट करने के बाद काफ़ी अच्छा लगा कि इसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए।
इस विचार के साथ तब अरुणाचल प्रदेश में हम होस्ट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया कि ग्रीन समिट, नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट अरुणाचल प्रदेश में एक बार होना चाहिए। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वॉरियर फाउंडेशन को और आपके पूरे टीम को कि अरुणाचल प्रदेश को होस्ट करने का मौका दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतना फास्ट 4G 5G का जमाना है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जमाना में लोग अपना नेचर, अपना जो प्लेनेट को भूलते जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कहीं भी पब्लिक गैदरिंग में मैं हमेशा ये लोगों को एड्रेस करता हूं कि अपना नेचर, कल्चर, उसको भूलना नहीं चाहिए। हमको नेचर ने बहुत कुछ दिया, लेकिन नेचर के लिए हमारा जो एनवायरमेंट, जो जिस पृथ्वी ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके लिए लोग आज सोचता नहीं है। हम ले रहा हूं उससे हवा, पानी, जितने भी जो हमें जन्म के साथ में जो 5 धातु दिया, उस चीज को हम सोच रहा नहीं है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे, टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया कि हम उसको भूलते जा रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए हमें बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो फाउंडेशन, जो वेयर फाउंडेशन, ये नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट को जो लेकर काम कर रहा है कि उसको हम सब मिलकर सपोर्ट करना चाहिए और सरकार की तरफ से भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, और लोग इस प्लेटफॉर्म में उनके साथ विचार के साथ वो जो काम कर रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज बहुत कम लोग सोचते हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जैसे कि हमारा जो गारो स्टूडेंट यूनियन ने प्रेसिडेंट ने जो बताया, आज दुनिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आगे है। जैसे कि आप देखिए यूरोप, यूके जैसे अमेरिका जैसा कंट्री कितना आगे हो गया, डेवलपमेंट में इतना टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन वो अपना जो पर्यावरण है, अपना जो नेचर, जिस प्रकार से जो साथ साथ हमको चलना चाहिए, वो कमती होते जा रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ऑनरेबल एमपी साहब ने मेंशन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ग्लासगो में जब मीटिंग हुआ 26 कॉप 26, स्कॉटलैंड में जब मीटिंग हुआ कि लोग क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर, आज दुनिया क्लाइमेट के ऊपर काफी चिंतित है। दुनिया काफी चिंता है कि क्लाइमेट को किस प्रकार से कैसे रोका जाए, किस प्रकार से ये चेंजेस हो। लेकिन बाकी कंट्री इतना आगे है, उसका इतना उनका चिंता, जो नेचर को जो नहीं बचाएगा तो चिंता करके तो फायदा नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन दुनिया के वर्ल्ड के लीडर ने उस सम्मेलन में उन्होंने कहा और सोचा कि भारत की प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आपको पता है कि भारत ऐसा देश है कि हम नेचर एंड कल्चर, जो अपना परंपरा संस्कृति को जिस प्रकार से जो बचा के रखा, विश्व में कहीं ऐसा कंट्री नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं जो भारत में जो बचा के रखा है। हमारे पास तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर दुनिया को मैं पांच अमृत में कंट्रीब्यूट करूंगा। तो उसी लाइन पे आप लोगों को पता होगा कि मिशन लाइफ कैंपिंग शुरू हुआ, उसमें भी एक सब्जेक्ट है मिशन लाइफ।
वो कैंपिंग में भी हमारा डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में से सबसे अधिक पूरे स्टेट में से अरुणाचल प्रदेश अधिक से पार्टिसिपेट करने वाला अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो देश में भारत में जो बचा के रखा है, पेड़ पौधा पशु पक्षी बोलिए, वो दुनिया में दूसरा कंट्री में नहीं है। एशिया में सबसे ज्यादा जंगल है बोलेगा तो कहां है? जो जंगल को बचा के रखा है कहां है बोलेगा तो इंडिया में कहां है बोलेगा तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्ट में कहां है बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, जिसमें से 83,743 स्क्वायर किलोमीटर में से अरुणाचल राज्य ऐसा राज्य है कि अभी भी हम 80% जंगल को हम बचा के रखा हुआ है डेवलपमेंट के साथ साथ। ये दुनिया का भारत ऐसा देश है कि और नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऐसा राज्य है जो हम लांग के रूप में, पेपरा का रूप में अच्छा ऑक्सीजन विश्व भर में और दुनिया का विश्व भर में हम अच्छा ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ऐसा प्रदेश है, इसलिए ये सबको देखते हुए हमने बहुत ही अच्छा लगा कि ये वेयर फाउंडेशन नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट को वो काम कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री की नेतृत्व में, पेमा खांडू जी के नेतृत्व में हम लोग पहला प्रदेश, भारत में पहला प्रदेश, ऐसा प्रदेश जो पक्के डिक्लेरेशन, पक्के टाइगर रिजर्व में हम लोग जंगल में कैबिनेट में निर्णय हुआ कि हम भी प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की ग्लासगो में, उसी लाइन पे हम क्यों ना 5 धारा का हम अपना प्रदेश से हम कंट्रीब्यूट करें। पक्के डिक्लेरेशन जो सीजोसो में हम लोगों ने कैबिनेट, पहले बार भारत में ऐसा कभी कैबिनेट ने डिसीजन नहीं लिया कि कोई राज्य ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि हम लोग जंगल में, पक्के टाइगर रीजन में कैबिनेट बैठक हुआ, वहां में डिसीजन लिया कि आजादी के अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में और अमृत काल 2047 को देश कैसा होना चाहिए, हम विश्व को क्या कंट्रीब्यूट करें, विकसित भारत किस प्रकार से होना चाहिए, और उसका एक मंत्र को लेके अपना राज्य सरकार भी काम कर रही है। लास्ट टाइम हम एनटीसी का मीटिंग हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी वो चीफ गेस्ट में, मैसूर में चीफ गेस्ट में, वहाँ हम सभी पूरे वर्ल्ड का सभी वहाँ एनटीसी में सबको बुलाया और टाइगर का ऊपर में चर्चा हुआ। 50 इयर्स एनटीसी का जो टाइगर रिजर्व, टाइगर कितने पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, और 75 दुनिया में कहीं नहीं है टाइगर भी, 75% भारत में है, जिसमें से 3600 समथिंग अभी तक भारत का जो आंकड़ा है पॉपुलेशन है, उसके बारे में भी काफी वहां चर्चा है। हम नेचर को अगर नहीं बचाएगा, नेचर के लिए हम नहीं सोचेगा, और हम इस प्लेनेट के लिए हम नहीं सोचेगा, जिसे हम हवा ले रहा है, पानी पी रहा है, हम सांसें ले रहा है, उसके बारे में हम नहीं सोचेगा, कौन सोचेगा? मनुष्य नहीं सोचेगा। लेकिन आज के तारीख में ये सोचने वाला बहुत कम, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा हमको। इसलिए लास्ट टाइम आप लोगों ने देखे होंगे कि G20 जो हुआ, इसका अपना स्लोगन था भारत का कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर।
वासुदेव कुटुंबकम। भारत ऐसा देश है कि दुनिया हमारा फैमिली है, संसार हमारा फैमिली है, हम एक फैमिली है। कोई कंट्री वो नहीं सोचता है, सिर्फ इंडिया भारत ही सोचता है वासुदेव कुटुंबकम, मेरा ही फैमिली है सब। ये G20 में भी इसी स्लोगन के साथ पूरे राज्य में, और यह माननीय ऑनरेबल स्पीकर यहाँ उपस्थित है, यहाँ में भी बहुत बढ़िया से उनके नेतृत्व में अच्छा से यहाँ कंडक्ट हुआ। तो इसी विचार के साथ नेचर, कल्चर और कार्बन सिंक में भी आप लोग को बताना चाहता हूं कि कार्बन सिंक में जो जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में है वो कई राज्य में नहीं है। मैं न्यू ईयर बायर फाउंडेशन को, डॉक्टर ऑनरेबल MP और हमारा शंकरदेव चौधरी जी को, उनके पूरे टीम को, और आपका जो मारक जी को, मैं पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप विश्व के बारे में जो काम कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ चर्चा नहीं, ये दुनिया का चर्चा। संसार को कैसा बचाना है, इस प्लेनेट को कैसा बचाना है, इस चट को, वो चट को हम कैसा करके बचाना, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमें विश्वास है कि जितने भी जो एक्सपर्ट है, एकेडमिशियन, आप लोग इसको चर्चा करके, इसको कंपाइल करके ये सरकार को सबमिट करना चाहिए। और मैं पिछले बार भी रिक्वेस्ट किया कि जो अच्छा अच्छा पॉइंट है, अच्छा अच्छा, इस चीज को हम गवर्नमेंट में पॉलिसी में लाना है। अभी आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि मैंने असेंबली से माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस पे असेंबली में मैंने एश्योरेंस दिया कि एयरगन सरेंडर, गन सरेंडर होना चाहिए। जितने जो पशु पक्षी है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो भी हमारा परिवार है। हम सिर्फ हमारा जो ट्राइबल समुदाय में क्या है, हम ट्राइबल समुदाय का हमारा माइंड सेट को चेंज करना होगा, विचार को चेंज करना होगा। जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा वो सक्सेस नहीं हो सकता। हम सिर्फ चिड़िया दिखता है, हरिण दिखता है तो हम एक मीट के रूप में दिखते हैं, उसको मारना है और खाना है बस। हाँ, ये बात जरूर है कि ट्रेवल परंपरा में हम सदियों से हम हंटिंग करके आए हैं, लेकिन आज की तारीख में इतना टेक्नोलॉजी, इतना जो गान है, एयर गन है, एक दिन को 5-5, 10-10, 20-20 मार देते हैं। उन जमाना में हम जो अपना इंडिजिनस जो हंटिंग है उसमें हम महीना में एक या साल में 1-2 मारते थे। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने हम लोग एयर गन एंड गन सरेंडर अभियान हम लोगों ने शुरू की, जिसमें से आज तक गन एंड एयर गन लाइसेंस गन मिलाकर 2600 से एबव सरेंडर हो चुके अरुणाचल प्रदेश में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में जिक्र की कि अरुणाचल प्रदेश अच्छा काम कर रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। मैं वो कहता हूं कि आप लोग जितने जो बैठे हुए जो यंगर जनरेशन है, स्टूडेंट्स है, आप लोग उसको ध्यान में अच्छा से सोचिए कि हम अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इतना बड़ा जंगल है, लेकिन जंगल में हमारा पशु पक्षी नहीं है, हमारा वाइल्ड लाइफ नहीं होगा तो जंगल का क्या भी नहीं रहेगा। जंगल जो चिड़िया है वो भी हमारा फार्मर है, हमारा किसान भाई है। हरिण है वो भी हमारा किसान भाई है। हम वो कुछ फल खाकर उड़ के जाते, दूसरा पहाड़ पे वहां ड्रॉप करते, फिर वहीं से वो फसल निकलते, हम उसको काटते। आप लोग बताइए कि कितने लोग वाइल्ड लाइफ को प्यार करते हैं, बताइए कितने लोग प्यार करते हैं उसको? उसको अपना परिवार मानना है।
उसको कहना नहीं है, हम उनको कहा नहीं छोड़ना है। उसको हमारा, वो भी हमारा माँ का तरह, पिताजी का तरह वो भी खेती करते हैं। हमारा जो हॉर्नबिल है वो कितना जो जंगल से जो फल तोड़ के का के दूसरा पहाड़ से दूसरा गांव में उड़ के वहां ड्रॉप करते हैं, वहीं से वो फसल निकलते हैं, वहीं से बड़ा होते, फिर वो फल को हम खाते हैं। हम जंगल के ऊपर पहले जितने भी हजारों सालों से हम जंगल के ऊपर डिपेंड करके जी के आए हैं। पहाड़ के ऊपर, नदी के ऊपर, जंगल के फल फ्रूट के ऊपर हम का कर आए हैं। उस चीज को आज हम भूलते जा रहे हैं। इस जमाना में, टेक्नोलॉजी के जमाना में, हम इसको री से कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। इसलिए ये ग्रीन समिट बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और इसको हम लोग मिलकर और आगे बढ़ाना होगा। हमको लोग कहते थे, अरे मामा ने तो आप क्या, हम लोग को कभी कभी हमारा गांव में जब हम दौरा करता है, हमको बोलता है कि मंत्री जी आप तो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, मंत्री जी हमारा मिथुन का बच्चा को शेर खा गया, हमारा गाय का बच्चा को वो शेर खा गया। आम गांव वाला को पूछता है उसको, शेर आप कम से कम आप तो बच गया, आपका मिथुन और गाय का बच्चा को खा रहा है, लेकिन आप तो बचा है। हाँ आप तो बचा है, क्यों नहीं खाएगा वो? अब शेर खाने वाला को, हरिन को मार मार कर आप खत्म करा, वो क्या खाएगा? ये तो फूड चेन है। उनका खाना को हम शिकार करके मार मार के खा रहा है, तो अगला वो क्या खाएगा? ईगल का जो खाने वाला, आप चिड़िया को मार के खा, अब हम सब मार मार के खा के खत्म करे, वो क्या खाएगा? वो आपका मुर्गी को तो उठा के खाएगा। ये हमारा लोग को समझना होगा। और इसका बिना ये संसार में, ये दुनिया में काम, इसका बिना वो संसार सुंदर नहीं हो सकता है। वो भी एक परिवार है। तो इसी विचार के साथ हम और दोबारा आपका जो नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट के पूरे टीम को अरुणाचल प्रदेश में जो आपने होस्ट किया, मैं और आंतरिक हृदय से मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से अगले बार भी हमने लास्ट टाइम ऑनरेबल सीएम साहब को हम रिक्वेस्ट किया कि सर ये नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट जो प्लेटफॉर्म, ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, इसको हम ऐसा ऑनरेबल सीएम पूरे नॉर्थ ईस्ट का ऑनरेबल सीएम सब मिलकर प्रत्येक साल को एक 1 CR हर स्टेट से बजट में रख के, हर स्टेट से 1 CR क्यों ना करें, इसको कंट्रीब्यूट करके इस प्रकार का पूरे नॉर्थ ईस्ट का ऑनरेबल सीएम का साथ आप थोड़ा चर्चा कीजिए। हमने ऑनरेबल अपना अरुणाचल के सीएम साहब को हमने कहा ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये अच्छा चीज है दुनिया के लिए, विश्व के लिए, एनवायरमेंट के लिए, इसको सोचने वाला एक ये संस्था है, ये एक एनजीओ है। तो इसी 2-4 शब्दों के साथ आप सबको, जितने भी जो एकेडमिशियन आप लोग जो चर्चा होगा टेक्निकल सेशन में, उसका बहुत ही अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिबेट, डिस्कशन, डिसीजन एंड उसको हम लोग डिलीवर करना होगा। इसी शब्दों के साथ आप सबको, जितने भी उपस्थित, जितने भी डिग्निटरीज, सभी को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और वेयर फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल। Thank you, sir, for your beacon of wisdom and inspiration to us all. I'm sure your invaluable insights will stir in us for action and contemplation. I would like to gently remind you all that after the inaugural session, we will have a tea break followed by parallel technical sessions, and the rest free audiences are requested to visit different exhibition and relish
the indigenous products in traditional food stall. After that, in the evening, we have cultural and prize distribution. Ladies and gentlemen, as we continue to revel in the spirit of this remarkable occasion, we now arrived at a highly anticipated moment of our event. With privilege, I would like to request and invite our chief guest to the dais, Sri P.D. Sona Sir, our Honourable Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly, to kindly address the gathering on the occasion of 8th edition of Northeast Green Summit. Please, sir. Good morning, everyone. I'm so sorry for cutting the program short because I have another engagement coming up soon. Anyway, it's a great pleasure for me to be standing here for the 8th Northeast Green Summit and acknowledging the presence of Honorable Environment and Forest Minister and Climate Change, Sri Mamanatungji, and Dr. Rajdeep Roy, Member of Parliament, and Advisory Board Member of Northeast Green Summit, and we have Mr. C.P. Marak, Indian Forest Service retired and Executive Chairman of MBOS, and Dr. A.A. Mao, Director, Botanical Survey of India, and all the climate change activists, student friends, and the people from different NGOs who have gathered here today for the summit, officials and host of dignitaries in the auditorium, and most importantly, the Bibjor Foundation for organizing this beautiful summit here at Itanagar today, media friends, and ladies and gentlemen. See, when I deliver here today on this occasion of Northeast Green Summit, I'll be speaking as a layman because I don't know much about the technicalities and the in-depth knowledge about the environment and climate change and the other issues which we call it as a present in clear danger. I'm told that a lot of experts have come and there's a technical session after the inaugural event. So I hope that everyone will benefit out of this insightful deliberation with in the technical session. So I'll request each and everyone to be part of that technical session. Inaugural is just a formality. We come here, we speak, and we go, and whatever I speak, it might not the content which you want to hear also. Because for me, I'm a novice, I don't understand much, but whatever I try to speak, I'll speak from my heart, and whatever little I understand about the environment and the clear and present danger. So, when I start the short deliberation, we saw the children from the Gurukul here, doing the prayer. What I could understand, he was praying the sun god to give strength. And we all know that sun is the source of life and how important the sun is for our nature, our environment, and for the entire universe. So these are the things, how the tribal society, the indigenous culture is so closely intertwined with the nature and the environment, and how important is it to balance ourselves with the nature and our own being. At times we fail to understand and we just want to take it from the nature all the time. And someone has rightly said, the nature has provided you free lunch, but we are not able to control our greed and we want more and more. So are we going to realize that we can't eat money until the last fish is killed, and until the last tree is felled, and until the last river is poisoned? It's a great things to ponder. And sometimes we live on this planet as if, we have another planet to go to if we finish up the resources here. Like the Honorable Minister said, this is our only home. We just can't think of going anywhere else apart from this blue planet which we are living in. So here we have a great responsibility towards the Mother Nature, towards this blue planet. So I can't resist the temptation when we talk about the blue planet. Many of you must have heard me saying this,
the quote from His Holiness the Dalai Lama. I always repeat, some might be, feeling it a little funny that why is he, always, kind of quoting His Holiness whenever it comes to environment concern. He says, when you look at the moon at the night, especially the full moon, it looks so beautiful. It has been inspiration for the writers and the poet to describe beauty. And we must have also heard in the songs, in the Bollywood and other, they refer the beautiful object to a moon. But His Holiness says, even if you want to, you can't go and settle there. This blue planet is our only hope. So as a young boy, I remember when we were studying in school, we read about Neil Armstrong landing in the moon way back in 1969. Now it's been more than how many years? Did we see any light and possibility of going and settle down in the moon? The technology has come up so far, but still the chances and the possibility to settle down in the moon is something which is beyond our imagination. So coming back to this, that's why we say this is our only home, and we all need to come together collectively, cohesively, put together our whole effort to protect this environment, protect this blue planet, which not only for ourselves, but for our coming future. And when we talk about the environment, we have seen from Kyoto till the Dubai, a lot of climate summits has happened. Are we seeing a change despite having so many summits? And now we're having a Northeast Green Summit. I'm told it's the 8th Northeast Green Summit. What are the tangible and practical changes which has come up after all this summit? Are we just going to places, having this summit and sitting and having a technical deliberations and going home, leaving behind what we have been taught, what we have been made to understand? I don't think that is going to help in our goal. What I feel that this should be a curriculum in the school right from the primary level, because our children need to be taught about the environment, and they should in turn tell their parents that for our future, please don't play with the environment. Please don't play with the nature. Then only I think, our elders, for that matter, us, we might, kind of realize that, yes, there is a real concern coming from a small child who doesn't even understand the thing. But he talks about environment to me. He talks about the wildlife to me. He talks about how to harmoniously live in this world. Because the Honorable Minister has said, how we all need to harmoniously live, because it's an ecological system. In the ecology, each and everyone have a role to play, right from an insect to the biggest of the animal on this earth. So I feel this Green Summit, Northeast Green Summit, like he said, in India we're the greenest region. And when we talk about Arunachal, and we're the greenest in the entire Northeast, but are we green in real sense? Or just as looks green? Looking green and being green in real sense is two different things which we need to understand. My friends come from different part of the country. They say Arunachal has the 80% forest cover. Arunachal is the lung of the India. And they come with a lot of hope, to see a lot of beautiful birds, animals, birds chirping early in the morning. But sad to say that we hardly get to see a bird singing, bird chirping, or an animal in the forest. Why? Because that is a reckless, hunting for pleasure, for game, and for the daily need as a food. But we are no longer food gatherer. We need to change our mindset,
and try to understand that this is the call of the day and this is what we need to do. And when we talk about the forest and environment for the coming generation, because it's so ironical when you go to the concrete jungle like Delhi, you see a lot of parrots, flying eagles, and the what you call that, the peacocks, dancing and singing. You can see, just close to any little forest, you see the squirrels and many birds and animals you can see freely roaming, monkeys, but the home doesn't have a dweller here. So we need to come together, put in all our efforts together to bring back what it was, how it was given to us by nature. It's our responsibility to restore in the larger interest of this entire Blue Planet family and for our coming generation. So I feel this kind of summit will really, really help in inducing that sense of responsibility amongst each and every one of us and work towards a common goal. Because environment and economy is two sides of one coin. If we cannot sustain environment, you cannot sustain ourselves. So this is what we need to understand. When we talk about the physical and infrastructure development, we need to see how we, very nicely balance the environment and the development and bring it together and do it for the larger interest of the state, the people, and our coming generation. So there are not many things to talk, not many things to share, but like I said, I have a engagement coming up, so I'll cut it short here. And anyway, not many people want to hear too long lecture. On a very light note, people say, Netaji, log bhashan jada, ration kam. So we do want to get into that category. With these few words, once again, thank you so much for inviting me today for this program. And once again, I hope and wish this becomes a great success. Thank you so much. Thank you, sir, for your insights and enriching us with your profound knowledge and experiences. And also, thank you for staying back. Now, as per agenda and earlier information, it's time for much awaited handing over of the live sketch to the chief guest by the artist. So I would like to invite Mr. Rishikesh Singha from Silchar to present his live sketch to our chief guest. And I request our chief guest to kindly receive the live sketch from the artist. Ladies and gentlemen, this artist started to sketch our chief guest from some time back during our inauguration of live artwork. Thank you all. With this, we have come to last item on the agenda, that is vote of thanks. So I would like to request Sri C.P. Marak, IFS retired Executive Chairman of MBOS and Advisory Board, member for his vote of thanks. On the occasion of the 8th edition of the Northeast Green Summit, I take it as my joy and privilege to propose a vote of thanks. Today we have gathered here on the 8th edition of the Northeast Green Summit with the theme Resetting Earth, Inching Towards Net Zero Emission Region. So that is the theme on which we have assembled here today for the 8th summit of this Northeast Green Summit. First of all, I propose a vote of thanks to the Honorable Chief Guest of the function,
Sri P.D. Sona, the Honorable Speaker of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly. Sir, for sparing your valuable time to be with us and for giving us a short and to the point observation, a very relevant observation. Like a doctor, you have put the pulse, you have managed to hit the pulse on the hand and have spoken to us from your heart. And I believe that also with the good wishes that you have given to us, that this summit will further rise to greater heights. So once again, on behalf of the VIPGO Northeast Foundation and the co-host Arunachal Forest Department, Forest and Climate Change Department, sir, I express my sincere thanks from the bottom of my heart for being with us today. Let us give, sir, our Honorable Chief Guest a big hand. Yeah. Thank you, sir. We have a great champion of forest, environment and climate change, particularly in the state of Arunachal Pradesh, in the person of Sri Mama Natun, an Honorable Minister for Forest, Environment and Climate Change, Government of Arunachal Pradesh. Sir, the passion with which you have shouldered your responsibility as a cabinet minister, and not just the passion in your heart, but also the passion with which you have carried on the administration and which has yielded results in the form of airgun surrender, which is unprecedented in the country. And I believe many more such unique events will take place in this part of the region. Sir, on behalf of the foundation and on behalf of all of us who are present here, thank you for calling us back to nature and also to remember our roots and also our culture. So thank you, sir, for this wonderful message to us. We have Dr. Rahul, Member of Parliament, who is also an advisory board member of the VIPGO Foundation. Sir, you have been through thick and thin, and the insights and the vision of the Honorable Prime Minister, which he has to have a net zero emission, and the other issues which the Prime Minister has sketched for the country. Thank you, sir, for reminding us on this occasion, and I believe that in the deliberations, all these issues will be taken up. So let us give a big hand of thanks to our Honorable Minister. On the dais, we have Dr. A. Mao. He is the director of a very, very important subordinate office of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Botanical Survey of India. It's almost a century-old organization, and Dr. Mao, he is heading this very important organization, and we are thankful, Dr. Mao, for being with us today. Although we have missed your speech owing to the paucity of time, so like in the assembly, we had to guillotine we had to apply the guillotine, but nevertheless, I know that in the technical sessions, his inputs will be solicited, and we look forward to your input in the technical session. So thank you, sir, for being with us this morning. Of the dais, we have dignitaries. There are too many of you to name. I wish to place on record my sincere thanks to each one of you for responding to the invitation and for enhancing the value of this particular Northeast Green Summit by your presence, and not only your presence but also your contribution in the stalls and in the
and also in the sessions which will be held soon after this inaugural function is over. There are a host of friends, patrons who have helped us out. There are too many of you in the list, but let me assure you that each one of you who have worked both behind the scene and also before the scene, on the scene, each one of you, your names and then your contributions are with us. I acknowledge your contribution, I acknowledge your presence here, and also particularly also the young generation who are present here. And in the word of Sri Thengsak Momen, that the youth power in India is something which is the dividend which God has given to our country, and we believe that the young generation will carry forward the message of this Northeast Green Summit. So with these words, let me thank each and every one of you. As I said, my apologies that I could not name each one of you, but definitely you are in our list, and we acknowledge your contribution, your presence in our midst today. And with this word, let me once again thank each and every one of you for being with us in this 8th edition of the Northeast Green Summit, co-hosted by the Vibgeo Northeast Foundation and its functionaries, and also acknowledging the support that we have received from the government of Arunachal Pradesh in the Department of Forest, Environment and Climate Change under the dynamic leadership of the Honorable Chief Minister of Arunachal, Sri Pema Khanduji, and also the Honorable Minister, Forest, Environment and Climate Change, Sri Mama Natunji. So thank you once again. Yeah. Thank you, sir. But I would like to request our dignitaries to be please present, be there for 1 minute for group photo session. So I would like to request founder, president and also secretary to please come forward to have a photo session with the dignitaries present on the dais. After which, I would also like to request all the special guests who are with us on off the dais to come forward and have a photo session with our guest on the stage. Of the dais guest whom we felicitated, I request again, please come forward.